is highly activating due to M effect. Highly activating due to plus M effect. And gives tri-substituted product, tri-substituted product on EAS, electrophilic aromatic substitute. Okay. Highly activating means it increases the electron density on the ortho position, the two ortho one para positions too much. That's why then a tri-substitute product. Now we are going to see that how to control that and how can we get a mono substituted product. ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नेक्स्ट में NH2 group is ortho and para directing due to plus M effect. पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें ब्रोमिनेशन. Just give me a second. Just give me a second. ठीक है, यहाँ पे लिखें ए पार्ट ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन. ठीक है, अब देख लीजिए, अब मत लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू ब्रोमिनेशन ऑफ aniline, if we have benzene here which is having NH2 group, then you just need to put a Br2 in aqueous medium. ठीक है, you don't need any you don't need any what I can say catalyst, and you will get price substituted product in which there we have aniline, benzene with NH2, and the Br will be in all the ortho and para positions. ठीक है, now to control this highly activating nature, we what we do is we do acetylation. जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, the acetylation reaction. Okay, so please write to control highly activating nature. To control highly activating nature, control highly activating nature, and get mono substituted product. Get mono substituted product. Aniline is reacted with acetic anhydride
This is also known as what? Acetylation of, it is also known as acetylation of acetylation of aniline. ठीक है, तो एक बार इस रिएक्शन को देख लीजिए क्या होता है इसमें. First of all, we have benzene ring with NH2. In this, we add acetic anhydride. What is acetic anhydride? CH3, C double bond O, and OH होता तो acetic acid होता, but if you are having the same fragment once again, acetic anhydride. Now, when this is going to react, तो यहाँ पे acetylation होगा. If you remember the reaction from the previous lecture, now the benzene ring, we have the nitrogen here. This nitrogen and one hydrogen will be as it is. This nitrogen will now be bonded with C double bond O, CH3. Now, what does acetylation does? Acetylation does two things. पहले तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये delocalize कर देता है. So this lone pair electron was first of all only going towards the benzene, है ना? Initially, when we did not do acetylation, आप अगर aniline में देखिएगा, then the nitrogen lone pair it was only going to the benzene ring in resonance. But right now what's happening? But right now what is happening? You can see that this nitrogen atom can go to this carbonyl carbon. This carbonyl carbon. ठीक है. So जो initially सिर्फ और सिर्फ resonance कहाँ हो रहा था benzene पे, now it is happening with what? Now it is happening with the carbonyl carbon also. That is why what is going to happen. That is why this particular thing. Just give me a second. So in this case, what is going to happen? The lone pair it is now being delocalized also in benzene after carbon. So benzene में उतना नहीं मिलेगा. Now benzene if it is not going to get the electrons, or it is not going to get the electron density, then जो इसका activating nature है वो decrease कर जाएगा. So after this if you do bromination, अच्छा एक और चीज वो ये करेगा ना acetylation, it is going to it is going to create hindrance for the ortho position. तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा because we have a bulky CH3 and CO group here. That is why when you are going to add the Br2 right now, you are only going to get a mono substituted product in which here you are going to have nitrogen with one hydrogen and C double bond O as it is. और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा only in one para position. Okay. Now, in order to remove this C double bond OCH3, we just need to do hydrolysis in the presence of an acid or a base, H2O in the presence of H plus or OH negative. Basically, H plus is rather better रहता है because nitrogen lone pair can show some acidic, sorry, basic behavior in the presence of a acid. यहाँ पे double bond O, यहाँ पे आ जाएगा NH2 वापस, and the Br will be here. So this is how we get a mono substituted product. ठीक है. So you can start writing. And I'm also going to write here after acetylation. आप देखना चालू कर दीजिए क्या जाएगा क्या लिखना है. After acetylation, the lone pair of nitrogen interacts with C double bond O due to resonance, and hence make the lone pair electron less available
for benzene, and this decreases activating nature. This decreases activating nature, leading to monosubstituted. Raise your hand once you're done. Yeah, they can ask you different questions also, by the way. For example, they can ask you how they can ask you how can you get monosubstituted product, है ना, for bromination of aniline. आप कहिएगा भाई acetylene, एक सवाल तो ये है कि why do we get tri substituted product, तो उसका आंसर ये because of the highly activating nature. Another question that they can ask is why acetylation of aniline gives monosubstituted product. उसका आंसर फिर ये तीसरा वाला है, ठीक है. और हाउ कैन यू कंट्रोल द हाईली एक्टिव नेचर, तो उसका आंसर पहला वाला. हाउ कैन यू गेट द मोनो सब्स्टिट्यूट, ठीक है. बट इफ दे आस्क यू व्हाई आफ्टर एसिटाइलेशन वी गेट अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देन द आंसर इज द सेकंड पैराग्राफ दैट इज both of you done. Who's writing? Rishita is writing. नेक्स्ट है नाइट्रेशन. See, what happens in nitration is when you are going to treat aniline with concentrated nitric acid and sulfuric acid, then nitration happens. And nitration में क्या होता है, बस conc HNO3, the presence of H2SO4, you will get NH2 with para position में NO2 plus और co position में भी NO2 plus meta position में भी NO2. I mean, feel that everything is not, I mean, it is not very सरप्राइजिंग टू सी अ मेटा प्रोडक्ट. जनरली आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें अल्फा मेटा सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ऑल्दो द परसेंटेजेस ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन प्लस एंड इफेक्ट इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है. बट इन दिस केस व्हाट वाज सीन दैट दिस पैरा प्रोडक्ट इज 51%, दैट इज परफेक्टली फाइन. द ऑर्थो प्रोडक्ट इज ओनली 2%,
Rather the meta product, it is 47%. Now what we were expecting is that we should get only ortho and para product. But right now what we're getting a meta product, and the percentage of meta product is also very high. That needs explanation. यहाँ पे होता क्या है? In the sense of concentrated acids on concentrated acids and sulfuric acid, the NH2 of aniline gets protonated, gets protonated to ammonium NH3 with a positive charge, है ना? With hydrogen which is deactivating and meta-directing meta-directing group. ठीक है? Hence, nitration of aniline also gives significant amount of M-nitroaniline with O and P products. ठीक है? ऑर्थो और पैरा के साथ इसको क्या होता है यहाँ पे? You get a large amount of meta product also. Write this down. Raise your hand once you're done. How to control this? Same thing, acetylation. NH2. So in this case, you are going to do CH3. वही same है ना? Acetic anhydride लेते हैं, but I'm going to write it in a different way, है ना? So that you're compatible with all the forms. CH3, CO, दो बार रहेगा और बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा. ठीक है? This is also how we can write it. I think ये पहले भी आपने देखा होगा. You get nitrogen with one hydrogen, C double bond O, CH3. Then in the presence of HNO3 and H2SO4, we are going to get NH with C double bond O, CH3 and NO2 here. Okay. After this hydrolysis, H plus here OH negative represents me water. NH2, here you will get N4.
ठीक है. Now, what does this again? Same thing वही कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, now it is going to be what? Now it is going to be delocalized also in the benzene और फिर carbonyl पे भी, ठीक है. That is why it is not going to be form any. It is not be. It will not be able to attach to the hydrogen atom that is present in nitric acid and sulfuric acid. ठीक है, तो वो उतना बेसिक रहता ही नहीं है. तो दो जगह पे उसको रेजोनेंस करना है, then that's why the lone pair is not very much available. तो वहां पे अमोनिया का जो NH3 पॉजिटिव बन रहा था, अमोनियम आयन, that is not formed. And the other thing is that ortho product तो बन ही नहीं सकता because the sites are very much hindered. ठीक है, तो सिर्फ एक पोजीशन बचती है, that is the para position. Right, next sulfonation. C part. Sulfonation. Here we have benzene ring. Here we have NH2, and in the presence of concentrated H2SO4, we are going to get benzene ring. और यहाँ पे एक salt मिलेगा आपको, NH3 positive and HSO4 negative. ठीक है. And when we are going to heat this at 453 approximately to 473 Kelvin, then you get a para product which looks like this. Here you have NH2, and here you have SO3. This is known as sulfonamic acid. Sulfa acid. Sulfonamic acid invasions lone pair electron. It attacks on the hydrogen which is available in the sulfonamic acid, और प्रोटॉन ट्रांसफर होता है from the acidic part to the basic part. यहाँ तक मिलेगा NH3 positive. Here you will get SO3 negative. Now, anything if the molecule has a positive and negative charge on it, एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया और नेगेटिव चार्ज दिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं. ज्विटर आयन, ठीक है. इस मॉलिक्यूल को नहीं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, उसको ज्विटर आयन बोलते हैं. जैसे कि इफ यू हैव बायोलॉजी देन यू हैव लर्न दिस in amino acid also, na amino acid is ज्विटर आयन के फॉर्म में. If you have not learned, then we are going to learn in this particular next chapter जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है. तो दिस इज ज्विटर आयन. बायोमॉलिक्यूल्स तो पढ़ेंगे. राइट. बाय द वे दिस मॉलिक्यूल इज नॉट ज्विटर आयन. इस तरह के जितने भी होंगे वो ज्विटर आयन, ठीक है. याद रहेगा सबको? हाँ या ना, पता है? याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक नोट लिख के. Aniline does not show Friedel-Crafts reactions, ना alkylation acylation दोनों नहीं देता है, due to formation of salt with Lewis acid AlCl3. Due to this, the nitrogen of aniline gets a positive charge and act as strong deactivating group. Therefore, it does not react further. Does not react further.
आपके पास aniline है, you have aniline, and obviously in the Fiddlecraft reaction you would have to add AlCl3, yeah, FeBr3 or FeCl3. All of these Lewis acid is going to give you a salt with NH2 forming a coordinate bond with AlCl3. अब यहाँ पे एक ऐसा phosphate charge आ गया, that is why it makes the benzene ring very deactivated. मतलब electron density उसमें बचती ही नहीं. All the electron density is pulled towards the from the benzene ring. That's why ये further reaction show नहीं कर सकता. ठीक है, write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Zaina and Rishita. Just waiting for Zaina now. Right, next topic, that is diazonium salts. ये देखिए, जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? आपके पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है. इट विल बी कनेक्टेड टू nitrogen which is strictly bonded with another nitrogen atom. Now since this each one nitrogen is having four bonds, it will get a positive charge, and then it will be having a anion compartment, so anion counter ion. Now this anion, it is generally Cl negative. However, it can be generally Cl negative or Br negative. Generally होते हैं sodium and bromine, but it can also be HSO4 negative, or it can be BF4 negative also, right? But these are most commonly used. ठीक है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है. अल्काइल के बारे में वी हैव सीन दैट Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, दैट इज अल्काइल है. हैं अल्काइल डाइazonium salts. Alkyl diazonium salts are highly unstable, are highly unstable and react with moisture to give alcohol. Moisture to give alcohol. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा. दी अराइल डाइसोनियम सॉल्ट, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था ना, सेम चीज लिखा था. अराइल डाइazonium salts are stable at low temperatures due to resonance. Due to resonance. Next is the method of preparation which we are seeing from the first chapter itself, है ना. स्टैंड में रिएक्शन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, इसका पढ़ना हम लोगों ने चालू किया है. अभी तक हम लोग कई दफा पढ़ चुके हैं, बट अगेन वी आर गोइंग टू राइट. वी हैव aniline which is going to react with NaNO2 plus HCl in the presence of low temperature 0 to 5 degrees Celsius. This makes nitrous acid HNO2 that I call as ONO
और इससे क्या मिलेगा आपको, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस H2। ठीक है, तो बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, Cl नेगेटिव तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको दो नेम रिएक्शंस हैं, उसके बाद देयर आर सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, पहला है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, हम इसको पीएच कर ले कोई दिक्कत नहीं है ना। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। टेल मी गाइस, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल ना। रिशिता, हर्षा, जायना बताइए। पीएच N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बोलो Yes, भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक। तो when we are going to treat this with CuCl2, cuprous chloride, Cu2Cl2, the presence of HCl, is going to get benzene ring, which is having a chlorine attached. We do the same reaction with Br, this Cu2Br2. So by the way, इसको CuBr भी लिख सकते हैं, है ना। In the presence of HCl, we'll get a benzene ring, which is, sorry, in the presence of HBr. And presence of HBr. And one more reaction is if you do CuCl, in the presence of KCl, you will get CH and there will be Cl here. Write this down. So all of these three reactions are called Sandmer reactions. Sandmer was the one who did it first. That is why it was called Sandmer reaction. The reagents are important because we are going to get the same product in the next reaction also. Also very similar reagent also, but that reaction is known as Gatterman reaction. मतलब जो हम करने वाले हैं, this is Sandmer. लोग बना सकते हैं वैसे. We have space here. This is Gatterman reaction. ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा था Gatterman coach. That is different. This is Gatterman reaction, which is different. Here also we have, yeah, tell me. Sir, can you scroll up, please? I just want to see the method of preparation. So you have not written that. Yeah, ठीक है, ठीक है, आराम से लिखो. just have to write the product. 1 minute, sir. Yes, sir. ओके, बाकी सब कुछ लिख लिया आपने. Yes, sir. ठीक है.
We are talking about the Gatterman reaction. In Gatterman reaction, same. The starting material is obviously Sandmeyer's, sorry, it is obviously benzene diazonium salt, N2 positive and Cl negative. And when you treat this with copper in the presence of HCl, you're going to get fluorobenzene. And when you're going to treat this with copper in the presence of HBr, you're going to get bromobenzene. वहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड वगैरह यूज किया था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज Gatterman reaction. Raise your hand once you're done. Next, other substitutions of diazonium group. Just give me a minute. Let me make. अभी आप लोग प्लीज मत लिखिए कुछ भी है ना. Let me first of all see how many lines do I need. I need 1, 2, 5 lines I will be needing. First reagent is AI. AI डालेंगे तो क्या होगा? बेंजीन रिंग एज इट इज, डाइजोनियम निकल के क्या हो जाएगा? आयोडीन रिप्लेस कर देगा, ओके ना, रिप्लेस बाय आयोडीन. डाइजोनियम ग्रुप किससे रिप्लेस हो जा रहा है? आयोडीन से. ठीक है, बस यही रिप्लेसमेंट होंगे बस. बहुत ही आसान. ये में ऑल्सो मतलब गेस कर सकते हैं आप. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नेक्स्ट वाटर, CHOH. उसके बाद आप ये थोड़ा सा डिफिकल्ट याद है, याद करने के लिए, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HCCO2. और if you just add ethanol, ethanol क्या है? The CH3CH2OH. Either you add the first reagent or the second, that is ethanol. दोनों केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा? बेंजीन. बेंजीन में कुछ नहीं लगा हुआ. ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट निकल जाएगा वहां से.
If you add HBF4, then you are first of all going to get CH as it is, N2 positive. N2 positive के साथ BF4 negative आएगा पहले, and then when we are going to heat it, you'll get the benzene as it is, and then इससे fluorine लगा रहा है. The last one is when in the first step you add HBF4 negative, and in the second HBF4 डालने से क्या बनता है आपको समझ में आ ही गया. सेकंड स्टेप में अगर आपने हीट नहीं किया और आपने डाल दिया कॉपर in the presence of NaNO2, and then you heated it, then in that case you are going to get benzene ring with NO2. ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं replaced by. पहले केस में किसने रिप्लेस किया? पहले केस में किया आयोडीन ने रिप्लेस, उसके बाद किया OH ने रिप्लेस, उसके बाद इस केस में हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, हियर फ्लोरीन एंड हियर NO2. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Just give me a second, guys. Right, next. Coupling reaction. Fourth one is coupling reaction. Okay. In the coupling reaction, what happens? We have benzene diazonium salt like this. दो reaction है coupling वाले. N2 positive. इसको पूरा खोल के लिख देते हैं. N Cl negative. Plus we react this with phenol. Phenol का जो एक हाइड्रोजन होता है, this hydrogen, it gets abstracted by the Cl negative.
और आपके पास कुछ ऐसा प्रोटीन मिलता है, बेंजीन रिंग bonded to nitrogen atom, bonded to another nitrogen atom, the same thing here. And now this nitrogen is finally bonded to the phenol, like this. This is done in acidic medium, and this is orange in color. Fine, we have a same reaction, but instead of phenol, we use aniline. Instead of phenol, we use aniline. And since aniline, it is basic in nature, we use OH negative. The color is also yellow. Here we have NH2. Here we have OH negative, and here also we have NH2. By the way, generally अगर आपको yellow color दिखे, है ना, and if it is smelling bad, पक्का उसके अंदर क्या है? NH2, अमोनिया का, नाइट्रोजन का कुछ कंपोनेंट उसमें पक्का है. You take any natural के in general अगर आपके पास कोई येलो चीज बुरी मतलब खराब महक रही है ना, इट इज नॉट फाउल स्मेलिंग, तो उसके अंदर नाइट्रोजन होगा ही होगा. ऐसा नहीं कि सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर गोइंग टू स्मेल बैड, बट यूजुअली स्पीकिंग. Similarly, if you have anything which is whitish in color, for example, जो एग होते हैं, एग के अंदर like the egg they smell bad when they rot. Usually तो नहीं, but when they rot they smell bad. Even though like generally like it has a certain smell. Egg के अंदर सल्फर होता है, तो सल्फर भी अगर सल्फर होगा तो it is going to be generally whitish in color and it will smell bad. बट ये मतलब जैसे बाल के अंदर भी सल्फर होता है, एंड यू विल लर्न दिस आल्सो इन बायोमोलिक्यूल्स, बट ऐसे बाल तो ब्लैक ही रहते हैं, है ना. तो नॉट एवरीथिंग व्हिच हैज सल्फर विल स्मेल बैड और विल बी व्हाइट इन कलर, बट इन जनरल हम बात करते हैं अगर वो व्हाइट है और खराब है तो तब उसके अंदर सल्फर. Raise your hand once you're done. So that's it. ये आपका सारे रिएक्शंस हो गया है. Let's do one conversion. ठीक है. बेटा क्वेश्चन कन्वर्जन करना है आपको 4 नाइट्रोटोलुइन to 2 bromo benzoic acid. There are certain conversions that will teach you like how to think about organic reactions and organic conversions. This was one of these reactions.
ठीक है, ये जो कन्वर्जन है ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा इस वजह से दैट इट विल मेक यू थिंक हाउ टू डू दिस, है ना, क्या मतलब थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है या बस यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते क्या क्या चीजें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट CH3 टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन एट ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो ऑफ CH3 चाहिए हमको, या फिर हम कह सकते हैं Br एट मेटा पोजिशन ऑफ NO2, है ना। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमको करनी है दैट वी हैव टू रिमूव NO2 ग्रुप। ठीक है, तो CH3 से कार्बोक्सिलिक एसिड तो आसान है, दैट इज KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KO, दैट रिएजेंट वी कैन यूज, है ना, इस रिएजेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस, है ना, ये कुछ रिएजेंट तो बिल्कुल याद रहते हैं, सिंपल कन्वर्जन। अब इसके लिए भी रिएजेंट हमको पता है दैट इफ आई वांट टू ऐड ब्रोमीन इन अ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पोजीशन, इस तरह के पोजीशन ब्रोमिनेशन करना होगा, आई नीड टू हैव Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या Fe के प्रेजेंस में FeBr3, एंड इन ऑर्डर टू रिमूव NO2 ग्रुप, ये थोड़ा सोचने वाला बात है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से कुछ भी निकलते हैं, उन्होंने दो तीन चीज देखा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन कन्वर्ट टू फेनॉल, तो फेनॉल में जिंक डस्ट डाल दीजिए तो बेंजीन बन जाएगा। वन मोर कन्वर्जन वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ NO2। अच्छा, जब भी आपके पास NO2 आया तो आप आगे का सोचिए, मतलब इस तरह सोचिए कि NO2 किसी चैप्टर का नाम नहीं है ना, NO2 किसी भी चैप्टर का, नाइट्रो करके तो कोई चैप्टर नहीं है ना, तो आपको NO2 विल ऑलवेज बी सीन, NO2 जो आपके पास कहीं पे भी आएगा ना, RNO2 आएगा या फिर बेंजीन रिंग विद NO2 आएगा, इट विल बी ऑलवेज इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट। इससे आप या तो हैलोजन हैलोजन फ्री प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो अल्कोहल, या तो ईथर, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो एल्डिहाइड, या तो कीटोन, या तो अमीन, या डाइजोनियम सॉल्ट। ये सारी चीजें आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ना कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कंपनी पे भी आ रहा है ना, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकता है आपका, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है, बिकॉज वी नो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लेते हैं हेलो एल्किन, हेलो एल्किन अगर कहीं पे आ रहा है, जब चैप्टर का नाम है तो उससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप कोई दूसरी चीज प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और उस हेलो एल्किन के रिएक्शन भी होता है। वहां पे आपको दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। बट व्हेन यू हैव थिंग्स लाइक अमाइड, व्हेन यू हैव थिंग्स लाइक NO2, ठीक है, देन इन दीज थिंग्स व्हाट यू नीड टू थिंक इज ओनली वेयर NO2 इज यूज्ड इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किस चैप्टर में MOP में यूज हुआ है NO2, तो सिर्फ अमीन्स वाले चैप्टर में यूज। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिएगा, NO2 में बेसिकली हम बता देते हैं, NO2 को पहले कन्वर्ट करेंगे हम NH2 में, NH2 को हम कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, देन आई विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, तो हमको वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिफाइड मेक CH3 as carboxylic acid in the first step only, तो फिर ब्रोमिनेशन करना मतलब ब्रोमिनेशन करना है। ठीक है, तो दैट विल बी डिफिकल्ट, इसलिए कर लेते हैं, ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू ब्रोमिनेशन, Br2 in the presence of FeBr3. In this case I will get benzene ring, CH3 will be as it is, NO2 will be as it is, और आपको Br मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव द NO2। NO2 को रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले स्टेप में Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप NaNO2 HNO2 डाल दीजिए, HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, उससे कार्बोनिक सॉल्ट बनेगा। तो स्टेप में
HNO2 will give you diazonium salt. उसके बाद third step में ethanol will do is release the then we will add KMNO4 in the presence of pH, you will get carbon. ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लीजिए जरा.